इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिनका सोल्यूशन आई थिंक आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन कभी ड्राइव नहीं किया होगा। So इन इक्वेशन को अगर हम देखें तो they all look like an equation of this now. ठीक है, क्योंकि इसके आप कंपोनेंट्स बना रहे हो तो 3 कंपोनेंट्स के 3 इक्वेशंस बन जाएंगे, एक ही इक्वेशन, सारी इक्वेशन एक जैसी है। There is a forcing function with negative sign and there is a differential equation of this. So today we are going to find the solution of this equation और इसकी मदद से हम इन इक्वेशन जो है इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। You would probably have seen the solutions already, but today we will drive them rigorous. And our approach is the green functions approach. So before we look for solutions for this equation, we are interested in finding the solution this is actually function of time as well. So we are interested in finding the solution of this equation, which we call the green function g, which depends on r and p. Then once we have the solution of this equation, the solution of this equation can be written as so once we have solution of this, we can write the solution of this equation again. The last time मैंने ये show किया था for an equation of one variable उसी को आप generalize कर सकते हैं, and you can actually check directly as well. अगर आप जो f है इसको express कर लें in terms of delta of r and t, and if you write psi, you get this equation from this. एक टाइम पे है और 3 स्पेस में x, y, z. So ये जो this is just a notation. For example, this delta is a 3-dimensional Dirac delta function in Cartesian coordinates. This means this similar to this d cube r mean dx, dy, dz. This is a compressed equation. So all we are interested in doing today is finding the solution of this. Once we have this solution follows by it. So let's write to it. So this is the equation. I call it scalar green function. This is a scalar. And the approach that we are going to use to solve this equation is the Fourier transform approach, and for that
have introduced the Fourier transforms in this fashion, that G of some TR, I can write it as the inverse Fourier transform of some G of omega R exponential minus omega t over. And similarly, this Fourier transform is तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होता है इसको डिफाइन करने के दो तीन तरीके हैं। बाद में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इस वैल्यू यू कैन चेक। ये जो 1 over 2 पाई का फैक्टर है ये भी कुछ यहाँ पे लगाते हैं, कुछ यहाँ पे और कुछ इसका स्क्वायर रूट इधर लगा देते हैं, स्क्वायर रूट इधर। अल्टीमेटली दे बोथ कम टू द सेम थिंग। आप इसको चेक कर सकते हैं दैट दिस इज रियली वैलिड। मैं उसको डाउन कर दूँ, यू कैन सी सम फोरियर ट्रांसफॉर्म को। अगर ये जो एक्सप्रेशन है जी ओमेगा आर का आप यहाँ पे पुट करें तो ये दो इंटीग्रल आ जाएंगे ओमेगा और टी के ऊपर, और यहाँ पे जी ऑफ टी और आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये एक्सपेंशन का जो इंटीग्रल है ये डेल्टा की फॉर्म में आता है, और डेल्टा से आप इसको खत्म करके यू कैन शो दैट दिस एक्चुअली कम्स आउट एंड 2 पाई कम्स बिकॉज ऑफ दिस simple integral property any integral, we call it some omega prime, the integral of an exponential function from minus infinity to plus infinity, this form below, it's always equal to delta of e times 2 pi. So that's why it's a function of 2 pi. So anyway, using this, जब हमने green function define किया था तो हमने कहा था कि it is such, it is a function such that when the derivative operator acts on it, it's a delta function. हमने ऐसे नहीं किया था, मतलब हमने कहा था dx g x x dash। हाँ, तो ये देखिए ना, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर इसमें है del square minus 1 over c square partial square g. तो when this acts on g, we get delta function. तो इसका मकसद क्या हुआ? मतलब इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होते, अगर डेल्टा ऑपरेटर ना होता, इंटीग्रल ऑपरेटर होता सम, तो फिर हम कहते हैं कि ओके दिस डेल्टा फंक्शन इज वेयर द सोर्स इज दैट। तो जब हम डेरिवेटिव ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका हमारा क्या मतलब होगा? ये डेरिवेटिव को भूल दें, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कुछ भी है, दिस इज सम ऑपरेटर सो व्हिच ऑपरेट्स ऑन g, and in actual equation you have some f of r, ठीक है, f of r is integer, and since f of r can be expressed as a superposition of deltas, so if we know the solution to one delta, we can construct the solution of all f of r from the solution of one delta. Let me show you that. First करें, take some, this is that derivative operator del square plus whatever. There is some function f of r, give into this, you get some sign. This f of r, which is something like this, gives you a sign something like this. But this f of r can be written as a superposition, a sum of deltas and so on. And if I know the response of this system for one delta, so for all other deltas, the only difference from this and this is that it is shifted and it has different height. और ये shifted कितना है और height कितनी है, you can find it by f of r.
So that's how you multiply the answer for one delta with f of r, which is just the different length and shift, and you sum over all deltas and you get this one. क्योंकि अगर आपके पास एक डेल्टा का सोल्यूशन है तो अब हम जो सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं एकदम वो से देखिए तो आई एम नॉट फाइंडिंग इट फॉर डेल्टा ऑफ r, आई एम फाइंडिंग इट फॉर डेल्टा ऑफ r माइनस r प्राइम. सो इसमें और इसमें यही फर्क है कि डिफरेंट r प्राइम पे है, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मैं जस्ट चेंज ऑन गो ऑन चेंजिंग r प्राइम टू गेट दिस. दूसरा फर्क है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ और है, सो आई मल्टीप्लाई इट विद essentially f of r prime and I integrate over all r primes and I get something. So that's graphically इसको देख सकते हैं. So essentially आप इसको पहले यूज भी करते थे, जैसे पॉइंट चार्ज जो है, अगर आपको उसके फील्ड का पता है कि क्या है, then you can find the field due to a line of charge by simply adding up, right? एक पॉइंट चार्ज का फील्ड डेल्टा फंक्शन क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/r². तो पूरी लाइन का आप जो है वो प्ले कर लेते हैं. अच्छा, ऑल यू हैव टू स्केल बाय रो. सर तो ये जो फंक्शन निकाली ग्रीन फंक्शन है, ये जो है दिस इज ग्रीन फंक्शन. जो पॉइंट चार्ज फ्रॉम फील्ड है दिस इज द ग्रीन फंक्शन, because this is the field for a point source. Okay, so this is the problem that we want to solve. We are trying to find the green function. After ये equation है इसको solve करें, and we are going to use the Fourier transform method. Fourier transform I defined like this. Different people would define it differently, but essentially it's an integral representation in terms of expressions. So जो green functions हैं, जो Fourier transform है, I hope that you have encountered their properties. For example, अगर आपको g का पता है कि इसका Fourier transform है ये g of omega, so what's the Fourier transform of partial g to partial t? So let me differentiate with respect to partial t throughout. So left side पे आ जाएगा partial g पे partial t, right side पे आ जाएगा ये तो t का फंक्शन ही है, ये कांस्टेंट ही है. t का फंक्शन सब ये है, इसका partial t क्या होगा माइनस a ओमेगा पहले आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि पार्शियल जी पे पार्शियल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा माइनस a ओमेगा इनटू जी, राइट. सो अगर ये हम प्रॉपर्टी यूज करें तो और डेल्टा ऑफ टी माइनस टी प्राइम का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा iota omega t dt so ये तो इंटीग्रल इवैल्यूएट करना बहुत आसान है क्योंकि ये सिर्फ नॉन जीरो होता है t इक्वल टू t प्राइम में, यहाँ पे आ जाएगा. सो डेल्टा का आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म, कार्य सम डेल्टा ओमेगा इज दिस. अब जो है हम वो जो टॉप इक्वेशन लिखी है उसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो बन जाएगी डेल स्क्वायर जी माइनस 1/c² और पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल t² का आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर.
हमने विद रिस्पेक्ट टू t फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है तो पार्शियल पार्शियल t वाला डेरिवेटिव माइनस का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर ये क्वेश्चन नाउ यू कैन गेस कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव ले लें तो हम ये डेरिवेटिव भी खत्म कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू r फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो ये b डेरिवेटिव खत्म कर सकते हैं because this del square is nothing but let me write it explicitly. वो जो टॉप इक्वेशन है ना उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो डेल स्क्वायर है वो तो रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी तो वैसे रहा तो जी ऑफ ई का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लिया जी ऑफ ओमेगा जो क्या नॉन है बट कुछ होगा इसी तरह जो पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल टी स्क्वायर है उसका आगे माइनस होता है ओमेगा स्क्वायर जी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो डेल्टा ऑफ एक्स वाई जी है वो वैसे ही रहा तो जो डेल्टा ऑफ टी माइनस टी प्राइम है उसका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म इधर फाइंड किया इधर तो यहाँ पे आया सर लेकिन ये जब आपने डेल्टा जी बाय जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है तो फिर वन ओवर 2 पाई का फैक्टर और e टू पावर माइनस i डिवाइडेड d का फैक्टर और फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1 ओवर 2 पाई dg बाय dt जरा इसका जो इस g ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म में ले लिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म इससे आ रहा है इनवर्स इससे आ रहा है वो 1 ओवर 2 पाई वाले उसके साथ डिफरेंट कन्वेंशन आप वो 1 ओवर 2 पाई उधर लगा लें एवरीथिंग वुड बी ओके क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक दफा ट्रांसफॉर्म लेते हैं एक दफा इनवर्स लेते हैं बिकॉज़ यू हैव टू गेट बैक टू द सेम डिग्री तो इट डजंट मैटर अब मैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल कोऑर्डिनेट भी फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करता हूं लेकिन जो कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूं उसके मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे लेट मी कॉल डिफाइन दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म एज लेट्स से देयर इज सम फंक्शन f so if there is some function of x and similarly like what's for here इसमें आप जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशन यूज करें आप सेम भी रख सकते हैं ये फॉलो करें ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसे एक में माइनस रखना होता है एक में प्लस तो 1 ओवर 2 पाई का फैक्टर ये एक के साथ लगा देंगे दूसरे के साथ या 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट के साथ ये स्पेशल तो ये डिफरेंट डिफाइन है क्योंकि एक स्पेस कोऑर्डिनेट है x y z और एक ओमेगा कोऑर्डिनेट और ये है अगर आपका जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है लेट्स से x का अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है व्हिच इज फंक्शन ऑफ लेट्स से x y z तो यहाँ पे आप ट्रिपल ले लें और सारे को मिला के मैं लिख देता हूँ q डॉट r ठीक है ये सब में बेसिकली लिखा हुआ है माइनस a होता है qxx एक्सपोनेंशियल माइनस a होता है qy y माइनस a होता है qz
So this is actually the triple Fourier transform. और इसका inverse Fourier transform क्या होगा? With the same definition, f of r would be 1 over 2 pi power 3 f of q iota q dot r dq. So this is the inverse transform, this is the transform. अब ये है कि फर्ज करें ये ट्रांसफॉर्म अगर आपने पार्शियल f में पार्शियल x का ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है क्योंकि ये तीन है तीन ट्रांसफॉर्म है तो हर एक के लिए 1 over 2 pi 1 over 2 pi 1 over 2 और अगर फर्ज करें हम चाहते हैं पार्शियल f में पार्शियल x का ट्रांसफॉर्म फाइंड करना तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को थ्रू पार्शियल f पे पार्शियल x से पार्शियल x ले लेता हूँ ये आ जाएगा इसमें तो x नहीं है इसका x लेंगे तो क्या होगा आयोटा q x बाहर आ जाएगा राइट क्योंकि ये तीन एक्सपेंशन है तो जो आयोटा q x है वो बाहर आएगा और अगर ये डबल डेरिवेटिव हो तो ज़ाहिर है इसका स्क्वायर हो जाएगा अब जो है हम इसी तरह अगर पार्शियल स्क्वायर में पार्शियल y स्क्वायर लें तो आयोटा q y स्क्वायर आ जाएगा और आई होप जब आप समझ गए कि इनका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इसको मैं उठा के अगर यहाँ पे रखूँ क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा qx x प्राइम आ जाएगा इसका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा qx y प्राइम और z प्राइम अब जो है इस सारे का मैं इकट्ठा ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ तो जो पहली तीन टर्म्स हैं वो आ जाएगी माइनस q स्क्वायर इन g where g is now function of q and omega plus omega square minus c square minus r prime yeah where q square is equal to qx square plus qy square plus qg square सर ये यहाँ q की जगह x नहीं है तो ये g के डिपेंडेंस g यहाँ पे जी सर नहीं ये अब q पे डिपेंडेंट है देखिए जब आप ले लेंगे इसका ट्रांसफॉर्म तो फिर डिपेंडेंस q पे देंगे क्योंकि x y z तो इंटीग्रेट आउट को देंगे ना हाँ तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये पार्ट है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये एक्चुअल फंक्शन है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस चलिए ये जो ट्रांसफॉर्म है इसमें माइनस आएगा ओके ये देखें ये डेल्टा ऑफ एक्स और डेल्टा ऑफ वाई डेल्टा जी यहाँ रखेंगे तो ये माइनस ही होगा क्यू आर तो याद आएगा माइनस ही होगा इसके लिए आएगा एक्सपेंशन माइनस ही होता क्यू एक्स एक्स प्राइम फिर इसके लिए माइनस ही होता क्यू वाई वाई प्राइम और उसके लिए माइनस ही होता क्यू जी जी प्राइम और सबको इकट्ठा करके लिखते हैं तो
पॉइंट। तो यहाँ पर आपने क्या किया क्या है ये एप्लीकेशन को एक इसी क्वेश्चन पे अच्छा आपने स्पेशल उसमें ले लिया अब मैंने स्पेशल में दिया ना, तो इसका आ गया माइनस ये होता qx स्क्वायर g माइनस ये होता qy स्क्वायर v माइनस ये होता माइनस qz स्क्वायर v। तो उन सबको इकट्ठा करके q स्क्वायर लिख दिए इनटू g, और ये g का ट्रांसफॉर्म लिखिए, और ये तीनों डेल्टा जो है इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको फिर मैंने कंबाइन करके उसका सम। अब आप इस ये जो अप्रोच है ये जनरल अप्रोच है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, और आप देखिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्रोच का फायदा क्या है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट्स बीन कन्वर्टेड इनटू एन अलजेब्राइक इक्वेशन। अब उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं आगे थे। अब हम इसका सॉल्यूशन तो क्विकली फाइंड कर सकते हैं। ये g क्या होगा बाय द वे, लेट मी कॉल दिस थिंग सम k नॉट स्क्वायर फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि ये बार-बार इसी तरह से आएगा तो इसको थोड़ा सा हम यूज करके लिखते हैं। So now g is equal to minus 1 over k naught square minus q square exponential minus a over r prime. So actually we have solved our equation, but in the Fourier domain. हमें एक्चुअली सॉल्यूशन चाहिए p और r डोमेन में, और हमें मिल गया q और ओमेगा डोमेन में। नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग एंड गो टू आवर डोमेन दैट वी वांट, जो कि मुश्किल काम है। और ट्रांसफॉर्म फाइंड करना आसान होता है, लेकिन इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना अक्सर मुश्किल काम है, पर वी कैन इजीली डू इट। समझ आ गई इस पॉइंट में? समझ Okay, we now have the solution of g in q and omega domain, and we want solution in r and t domain. So हम इसका inverse transform find करेंगे तो we'll do it. सर वो माइनस नहीं आएगा, आप जी क्यू भी निकाला है क्यू डब्ल्यू ये वाला माइनस तो ये वाला, हाँ लेकिन उधर भी माइनस है, ये k नॉट स्क्वायर माइनस q स्क्वायर तो मैंने वैसे कहा। तो अगर आप कहते हैं इसको हम उल्टा कर दें, ये माइनस खत्म कर देंगे, हाँ ये उधर इसको मैं लिख देता हूँ q स्क्वायर माइनस। So let's first convert into this domain, क्योंकि अगर से हमने अल्टीमेटली जाना RT में है, लेकिन ये जो डोमेन है ये सेल्फ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफा हम प्लेन वेव्स का काम कर रहे होते हैं जिनका ओमेगा डिपेंडेंट या फ्रीक्वेंसी डोमेन में होते हैं। So even this green function is needed. So let's first find this thing, which is ये और ओमेगा कैसे मिलेगा, ये 1 over 2 by q exponential iota 2 dot r dq RT also ये मतलब हम Q डोमेन में ना तो Q से हम R में जा सकते हैं इस इनवर्स ट्रांसफॉर्म से। So this is the integral that we have to solve. अब अगर ये g of q को हम यहाँ पे पुट करें तो ये फैक्टर तो बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये t प्राइम और ओमेगा डिपेंडेंट है। क्या देगा 8 pi q exponential minus iota q dot r prime exponential iota q dot r over q square minus k naught square, और ये जो एक्सपेंशन है इनको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ।
and for convenience, let's define a symbol capital R. इसको हमने यूं कर दिया। जी, सो अब हमारा काम सब इतना रह गया इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। अब देखिए अभी मैंने जो q यहाँ तक लेके आया उसमें हमने यूज किया हुआ था कि q is qx qy qz, that's also fine। लेकिन अगर इसका मैं इंटीग्रल वापस से मैं इन्वर्स इंटीग्रल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे करूँ जिसमें q जो है वो कार्टेशियन में है, this integral becomes very difficult to solve। But since this is independent of any coordinate for q, the only thing is this q जो है it should span the whole q space। कि q के जो तीनों कंपोनेंट है x y z, they should अगर आप एक 3-dimensional space इमेजिन करें जिसमें वेरिएबल जो है वेक्टर q है, so all you have to do is integrate this thing over the whole space। The coordinate system itself doesn't matter, so we can choose a coordinate system which makes the solution of this integral, these three integrals, easier। तो उसके लिए let's consider a spherical coordinate system for q। मैं r की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल स्पेशल वेरिएबल है हमारा, जो q कोऑर्डिनेट है जिसमें इंटीग्रेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। सो लेट्स चूज, देखिए वो जो स्फेरिकल सिमेट्री या प्रॉब्लम जो आता है वो रियल स्पेस की बात, जिसको कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है, which is R minus R, उसको हम कुछ नहीं ले रहे, इट्स स्टिल जनरल। हमारी इंटीग्रेशन है q के ऊपर, R तो बस कांस्टेंट है इस इंटीग्रल में, तो मैं R की बात नहीं कर रहा, जो q है उसकी बात कर रहे हैं। q and R are independent from each other, so we can choose q, the coordinate system for q, which makes the solution of integral easier। q is just a hypothetical space। हम देखें जो फोरियर इंटीग्रल क्या कहता है, we go from one space to another space, which is fictitious mathematical space, but q only has to be such that it spans the whole space। It can be Cartesian, cylindrical, spherical, whatever। देखिए अगर आप इमेजिन करें जैसे ये स्पेस है, रियल स्पेस, अब ये स्पेस तो स्पेस है, इसको आप कार्टेशियन से एक्सप्रेस करें या सिलिंड्रिकल से, इट्स ऑल इक्विवेलेंट, राइट? You just need to express the points in this space। क्यों नहीं करना? Well, definitely difficulty जो है वो डिपेंड करती है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर तो हम जस्ट पॉइंट को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो कार्टेशियन में ज़्यादा आसान है, because we are people who like to move in lines। Okay? But they are all three completely equivalent। You can span the whole space from minus infinity to infinity in all three directions using any coordinate system। So as long as we choose a coordinate system that integrates over the whole space, we are fine। So let's choose q to be a cylindrical coordinate system where q has variable, let's say q, which is magnitude, and let's say theta q and phi q, and let me choose so this is our q space, and let's take the r vector to be along let's call it qz, so that when we have a general q vector here, this is theta q, so this is a point in q space। तो अगर हम कैपिटल R को, क्योंकि कैपिटल R is arbitrary, you can choose it along, let's say qz, since this q space is arbitrary, so let's say choose qz to be along R, so that q dot R
is QR cosine theta q, और dq जो है by the way this will be q square sin theta q d theta q d phi q dq। तो अब ये हमारा इंटीग्रल बन जाएगा d of r omega a pi q integral over q goes from 0 to infinity, integral over theta goes from 0 to pi, integral over phi goes from 0 to 2 pi, and then we have exponential iota q or cosine theta q square minus k naught square q square क्योंकि q स्पेस जो है इट्स आर्बिट्रेरी, तो I chose it judicially so that our qz aligns with r, so that q dot r is simple q or cosine theta। हाँ मैंने क्योंकि q arbitrary space है तो I choose it for to simplify the problem। अब ये जो इंटीग्रल है वो इसमें रिड्यूस हो, and now I see that the integral over phi, क्योंकि phi डिपेंडेंस कहीं भी नहीं है, just 2 pi, so ये बन जाएगा exponential iota omega t prime 4 pi square 0 to infinity q square sin theta q square minus k naught square and so q r cosine theta q d theta। अब देखिए ये जो पार्ट है ना q square over q square minus k naught square, it's independent of theta, तो थीटा इंटीग्रेशन सिर्फ इस टर्म पे आएगी, which is easier right, क्योंकि अगर आप ये cosine थीटा को x ले लें तो ये sin थीटा d थीटा is just the dx, right? ठीक है बोलो, ये तो एक्सपेंशन होगा और समथिंग इनटू x y बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, लिमिट पुट करें, तो लेट मी जस्ट पुट द रिजल्ट ऑफ ओनली दिस इंटीग्रल टू बी बिट क्विकर। So it will come to 4 pi square r 0 to infinity 2 q sin qr over q square minus q naught dq। या d phi क्योंकि कुछ भी phi पे डिपेंडेंट है, ये 2 pi आ जाएगा इसके अंदर, nothing is phi, तो वो 4 pi square हो गया। उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो इंटीग्रैंड है इसको देखिए, दिस इज एन ऑड फंक्शन ऑफ q, ऑड या इवन? इवन, इवन एक्चुअली दिस इज इवन, ये ऑड है राइट,
और ये भी ऑड है, तो ऑड एंड ऑड इवन हो गया। सो दिस इज an even function of this thing, right? So the even function होता है, you can if this go from let's say 0 to infinity, you can make it go from minus infinity to infinity and just take its half. क्योंकि डबल हो जाएगा, जितना इंटीग्रल राइट साइड में है उतना इंटीग्रल लेफ्ट में भी। अगर आप टोटल कंप्यूट करें तो इट्स हाफ ऑफ दैट। ओके, 2 लगा हुआ था तो मैंने उसका हाफ लेके तो उसको माइनस इन्फिनिटी कर दिया, ओके इवन। ये आप इसको सॉल्व करने की बात करें, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट इंटीग्रल टू सॉल्व दैट, सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम डूइंग फ्यू ट्रिक्स टू मेक इट अवेलेबल टू सॉल्व। अच्छा, इससे पहले जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, सब लोग रेसिड्यू इंटीग्रेशन से फेमिलियर हैं? मैं थोड़ा सा आपको अपना रिवाइज कर दूँ। सो रेसिड्यू इंटीग्रेशन इज दिस, it's very simple actually. It seems complicated but it's very simple. So if you have an integral over a closed interval, इसकी शर्त ये है इस थ्योरम इसको यूज कर सकते हैं। If you have an integral over any closed interval of some complex function f of z, the answer actually is very easy. अगर इसके अंदर कोई एक पॉइंट है जिसमें ये फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है, so then और अगर फर्क करें कोई पॉइंट नहीं है जिसमें इन्फिनिट होता है, इंटीग्रल इज सिंपली 0. If there is no point where the function goes to infinity, there is no pole, the answer is 0. But if there is some point, let's say some z1, then the integral, even then it's very easy. You have 2 pi iota into residue. Residue at that point. The residue itself is very easy for simple function. All you need to do is multiply this f of z with z minus z1 to eliminate that singular point, and then evaluate the remainder at z is equal to z1. फर्स्ट करें, ये फंक्शन f of z है आपका 1 over z minus 2, और अगर आपका इंटीग्रेशन कंट्रोल जो है, let's say it contains this point z is equal to 2, then the integral will be, इसको आप z minus 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बच जाएगा, to make it interesting let me go to z, इसको आप z minus 2 से मल्टीप्लाई करें तो z बाकी बच जाएगा, और z को 2 पे वैल्यू करें तो 2 आ जाएगा into 2 pi में। शर्त इसके लिए ये है कि इंटीग्रल जो है वो क्लोज कंट्रोल होना चाहिए। That's what I'm going to try to convert this integral. So उसके लिए अब ये जो है चीज q sin q1, अब अगर ये देखिए ये है इवन फंक्शन, और अगर मैं इसके अंदर एक ऑड टर्म ऐड कर दूं, एक ऑड फंक्शन अगर इसके अंदर ऐड कर दे तो कुछ होगा तो नहीं इंटीग्रल में, ठीक है ना? मैं इसके अंदर एक ऑड टर्म ऐड करता हूं, उसका इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी 0 ही होगा। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल अगर आप ओरिजिन के फर्क करें, इस तरह का कोई फंक्शन है, जितना इधर से जाते हैं उतना इधर तक जाए तो इंटीग्रल हमेशा 0 होगा, क्योंकि जो नेगेटिव एरिया है तो कैंसिल विद पॉजिटिव एरिया। सो फॉर ऑड फंक्शंस द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज 0। सो अगर मैं इसके अंदर एक टर्म ऐड कर दूं आयोटा q कोसाइन q r व्हिच इज ऑड, क्योंकि q इनटू कोसाइन जो है वो ऑड होगा,
So everything remains okay, but I will be able to write it exponential iota QR q square minus a naught square dq. अब अभी भी ये क्लोज कंटूर इंटीग्रल में नहीं चेंज हुआ, लेकिन let's imagine that this q is some complex number. So in complex plane, let's say this is the real of q and this is imaginary of q. Let's do it here. This is a part of electrodynamics that sometimes even PhDs don't understand. So if you don't, please ask. So again, इसको देखें. So this is an integral which goes from minus infinity along q to plus infinity. Okay. Let's see when we can make this answer. अगर इसको आप देखें तो ये फंक्शन मान रहा है एक्सपोनेंशियल होगा क्यू आर. अब जो क्यू आर है एक्सपोनेंशियल क्यू आर, इसको आप लिख लें इस तरह रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट क्यों बन जाएगा अगर मैं क्यू को रियल और इमेजिनरी फॉर्म में ब्रेक करूं. अब ये फंक्शन जो है दिस विल go to 0 if this qi is positive. This capital R is always positive. Remember, this is the distance. This is distance. So this is always positive. If qi is positive, this number will go to 0. If qi is large, R is arbitrary. It can be small, it can be large, but it is positive always. और अगर qi जो है ये large हो और positive हो, this will go to 0. So if mean that if I have my integral which only I have to compute from here to here, I can go far away from here and construct a path like this. This integral should still be the same. Exponential iota omega t prime 4 pi square r. Now the integral is over closed contour q exponential iota q r q square minus q r square dq, and my argument is this, that this is the same as that if c is such that it closes in the upper half of the q plane at infinity. क्योंकि इसके ऊपर इंटीग्रल वैसे ही 0 है, जो सॉरी इंटीग्रांड जो है वो 0 है, क्योंकि इंटीग्रांड के लिए टर्म है which for qi large and positive is 0. So यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल सेम है अगर मैं यहाँ से फुल करूँ, क्योंकि इसके ऊपर इंटीग्रांड पॉजिटिव हाफ के लिए नेगेटिव के लिए नहीं, ये रियल के हिसाब से इमेजिनरी के लिहाज से तो पॉजिटिव है. इस पूरी अपर हाफ प्लेन में qi जो इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि वो पॉजिटिव है. रियल पार्ट कुछ भी हो, ये नंबर हमेशा प्लस माइनस 1 के दरमियान होता है, क्योंकि ये आयोटा q और r है, तो ये साइन और कोसाइन होता है. तो ये जो इमेजिनरी वाला नंबर है दिस गोस टू 0. So now this is the integral that we have to evaluate. So let me write it like this. This g is omega t prime 4 pi square r q exponential iota q r, और जो नीचे वाली टर्म है this can be written as
ये जो टर्म है ना इंटीग्रांड के अंदर जो एक्सपेंशन टर्म, इसको अगर देखें तो इसको अगर मैं क्यू के लिए इमेजिनरी पार्ट में लिखूं तो ये बन जाएगा। ये तो नंबर हमेशा प्लस माइनस 1 के दरमियान रहता है, क्योंकि ये एक्सपेंशन होता है क्यू आर है तो ये साइन प्लस साइन होता कॉस होता है। तो ये नंबर जो है दिस आर रियल नंबर व्हिच गोज टू 0 इफ दिस नंबर इज लार्ज एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस साइन है तो बाकी पॉजिटिव होना चाहिए, तो आर हमेशा पॉजिटिव। और क्यू आई अगर हम पाथ अपना इसके अंदर वो वाला पाथ इंक्लूड करें जिसपे क्यू आई जो है वो लार्ज है और पॉजिटिव रहे, सो आवर आंसर वुड बी 0। इनिशियली जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो इनिशियली तो QI इतना स्मॉल है कि वो आप उसको कोई बिग वैल्यू आ ही नहीं। हाँ बट व्हेन लेकिन फिर वो ये आपका आर्गुमेंट है कि वो लेफ्ट साइड वाले हाफ से कैंसिल हो गए हैं। आप let's see if this will cancel with that or not. Again, let's say that we just neglect this little bit part. ठीक है? क्योंकि ये जो है ये quickly it will approach to 0. क्लोज तो नहीं हुआ है। जी? मेरे पास क्लोज तो नहीं है। I get your point. For unless we assume R to be large as well, अगर R को हम arbitrarily assume करें that this can be small as well, then this is not exactly equal to this. This is approximately equal to this. क्योंकि थोड़ा सा जो पाथ है initially this number will begin going down quickly, but let's say infinitesimally close. Unless this contribution cancels this contribution, we doesn't have this contribution. Okay? Yeah, that's a good point. But when we move away from this axis little bit, then this quickly goes to 0. So now we have converted that integral into this integral, and then there is another problem. And the problem is this: that we have two poles in this integral. Because this integral goes to infinity when q is equal to k naught and q is equal to minus k naught. So there is one point here, and there is one point here where the function goes to infinity, and our path is actually also passing like this. And now we have actually several choices that we can think of this path to be like this, then goes like this around this point a little bit, and then let's say it goes above this thing and then closes. Let me call it case 1. Okay, in case 1 we have only one pole at q is equal to minus k naught, so this integral is like this. So इसको आप q plus k naught से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 pi आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और q की जगह पे क्या रख देंगे माइनस k naught, यहाँ पे आ जाएगा माइनस k naught, नीचे आ जाएगा माइनस 2k naught. So we have this 2 goes with 2, and we have iota, pi goes with pi, we have exponential iota omega t prime, minus cancel with minus, 4 pi r, iota exponential minus iota p naught. So this is the G for one case.
there is some iota that I have missed actually. क्योंकि यहाँ पे iota नहीं होना चाहिए. Let's see again. When we get the iota here, जो आर्ट टर्न एट टर्न वहाँ पे यहाँ ये है. So let's multiply with iota here and iota here, and then add q cosine so that this becomes exponential iota. So there is an iota here. So ये जो iota है ये से cancel. You can take another case. Mathematically, the non-instrument solution. Then you can imagine that this contour is closed like this. यहाँ से आता है, फिर इसको include कर लें, and then include. तो फिर solution क्या है? ये part तो यही रहेगा. यहाँ पे you multiply with q minus k naught, ये खत्म हो जाएगा. और यहाँ पे k naught आएगा, यहाँ पे k naught आएगा. And then k naught goes with k naught. जो यहाँ पे 2 pi iota होगा, बाकी पार्ट उस तरह से आएगा और यहाँ पे आ जाएगा k naught. So you have plus iota k naught. तो ये iota k naught. और अगर आप इस तरह से कर लें, ये भी शामिल करें और ये भी शामिल करें. Then you have इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि असल में दोनों जो पोल्स है ना बिल्कुल लाइन के ऊपर लाए हैं. Yes, we can consider both of them. And they all correspond to different physical situations. So in the second one, we only consider class K. क्योंकि ये possibilities है ना, that there's one possibility to include only one, or the other, or both, or none. अगर दोनों को करें, so we have sum of both, right? और केस 4 भी करें, include none, so then G is 0. So physically, अगर आप देखें, so this means waves that are going away from the source. This exponential iota k naught r represents plane waves in phasor form which are going away and whose amplitude is decreasing as r is increasing. So these represent electromagnetic waves that are coming towards the origin with their amplitude increasing as they are approaching the origin. So this represents waves that are flowing towards the origin. And actually, we can see that our choice of closing contour in the upper hand has also ensured that the waves, the field, the solution should be 0 at r is equal to infinity. Because this function को मैंने मिटा दिया, तो जो एक्सपेंशन लिखा हुआ था उसमें अगर r large है, then surely it is 0 if 2y is positive. So ये जो solution है, this represents waves that are going away from the origin. ये जो है, this represents a solution
that have standing waves. The waves are coming and going. And this represents a zero field, which is also a physical concept. So is the source of The source is point source located at capital R is equal to 0. Okay, we are still not done because we have a solution only in omega domain and not T domain. So that we can do quickly because the integral is easy. Now I want to find g of t r, which is g of t की definition क्या वहाँ से देखो 1 over 2 pi minus infinity तो इसकी जगह पर उसको ला कर रखते हैं. We have 1 over का केस जो है ना लेफ्ट से 1 को कर केस 1 के लिए बन जाएगा 8 pi square r exponential iota omega t minus t prime exponential minus iota k log r dt d omega. ठीक है, मैं गलती तो नहीं की. क्या इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, तो असल में कैपिटल जस्ट अ सिंबल फॉर r minus r prime magnitude. R prime, but R prime is a constant. नहीं, R prime है, it's a constant actually. So R prime, T prime, they are constants. क्योंकि R prime जैसे ये बता रहा है कि फर्ज करें आपका सोर्स जो है वो ऑरिजिन पे पड़ा है कहीं और पड़ा, और T prime बता रहा है कि किस T इक्वल टू T पे आपने सोर्स को एक्साइट किया. सर ये हमारे पास ओमेगा ओमेगा टू वेन का वापसी टाइम और आर डोमेन में जा रहे हैं क्योंकि आर जी हम टाइम में जा रहे हैं, R में तो ऑलरेडी हम हैं, जी बट वी आर गोइंग फ्रॉम ओमेगा टू टाइम. सर ये 8 pi क्यूब है जी 8 pi स्क्वायर है pi क्यूब है. ये स्क्वायर है, ये 2 पाई और वो 4 पाई r1 से आ रहा है, तो 8 पाई स्क्वायर हो गया. इन्हें किसको मैं पुट करूँ? k नॉट जो है उसको वापस लिख लें ओमेगा ओवर c, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाहर आ गया r ओवर c. ये आप केस 1 की ही करते हैं. केस 1. अब ये देखिए, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन. So 2 pi into delta of this thing. So 2 pi से cancel हो गया. We have delta of t minus t prime plus r over c over 4 pi r. This is the solution for one case, and the solution for the other case is थर्ड केस इनका सम होगा तो हम नॉट करेंगे. सो एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये. इसमें फर्क है, यहाँ पे प्लस है उसमें, वहां पे माइनस. So these are the two green functions for our source. You started from T and R domains and started from वापस T R domain. जी, क्योंकि हम सॉल्यूशन तो किया हमने चाहिए. फोरियर से जो ट्रांसफॉर्म है, we used it a tool to solve the differential equation. Directly solve this. Now directly, क्योंकि delta function is involved and it's very hard to solve it. There you can actually check Elliott's group and Zeigel's group. They have two or
alternative approaches in that. They can go, they are argumentative, let's assume it's going like this, then they take approximation and limits. This is the rigorous way of solving. Let's not try to make sense of the solutions. देखिए आपका सोर्स जो है वो था ये, और ये सोर्स क्या है? अगर आप इमेजिन करें x, y, z स्पेस, सो ये फंक्शन जो है ये नॉन जीरो है किसी एक पॉइंट पे स्पेस पे और किसी एक टाइम के ऊपर। यानी आप इमेजिन करें कि इस पॉइंट पे ये r इक्वल टू r प्राइम पॉइंट है और यहाँ पे एक खास टाइम t प्राइम पे मैंने जस्ट एक स्विच ऑन और ऑफ किया, एक बल्ब है जो ऑन हुआ फिर ऑफ हो। सो ये सोर्स एक तो सिर्फ एक पॉइंट पे है, दूसरा ये सिर्फ एक इंस्टेंट पे नॉन जीरो है, उससे पहले भी जीरो है उसके बाद भी जीरो। तो इससे अगर फर्ज करें आप लाइट को भी मेजर करें, अगर ये लाइट सोर्स छोड़ देंगे यहाँ हुआ फिर ऑफ हुआ तो आपको लाइट या फील्ड किस तरह का नजर आना चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एग्जैक्टली, वी शुड एक्सपेक्ट अ स्फेरिकल वेवफ्रंट जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं और एक और उसकी एक्सटेंट कितनी होनी चाहिए? एक्सटेंट भी इन्फिनिटली स्मॉल होनी चाहिए। इट्स जस्ट अ थिन शेल ऑफ लाइट व्हिच इज जस्ट एक्सपैंड। एक बैलून है which is going on expand और at a later time t कहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये नॉन जीरो हो, such that the distance from that point to this point is given by the speed of light, right? कि ये distance जो है this should be equal to c. You should expect this thin shell to be non-zero when the distance from origin is equal to c. So क्या ये solution पर इसको देखें, because this is the physical solution that we are talking about. ये delta function कहाँ पे non-zero है? This is non-zero at t minus t prime minus r over c equal to 0. So it means this is non-zero at a later time t minus t prime when this is this r when r is equal to, आप समझ लें कि t prime 0 इमेजिन कर लें। So when r is equal to ct, this function is non-zero. So this simply represents an expanding shell in time, and 1 over r tells us that its magnitude is decreasing as r is increasing. क्योंकि इस पॉइंट से ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट स्पीड c के साथ? ct करेगी। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइट है, आप फिलहाल इमेजिन कर लेंगे t प्राइम 0, ठीक है? t इज इक्वल टू 0 पे एक फ्लैश है, तो वो क्या होगा? एक स्फेरिकल शेल है व्हिच इज एक्सपैंडिंग और उसका रेडियस कितना होगा? एट अ गिवन टाइम t इट्स रेडियस इज c. ये मैं कहता हूँ, एंड दैट्स व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय दिस. सो दिस इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज representing this physical situation. ये opposite को represent कर रहा है when the shell is collapsing. Mathematically it's possible and sometimes it is used to represent combination solutions, but this is the most important solution that we are talking about. और इसको retarded solution भी कहा जाता है because this thing has been retarded by a factor r over c. आपको बल्कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी देखते हैं कि लेट्स नाउ गेट बैक टू द एक्चुअल सॉल्यूशन दैट वी वांट, राइट? सो व्हाट्स नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग?
I know the green function, so phi should be equal to 1 over phi is equal to integral over space integral over t prime g into this thing. So not this thing. This is our f of r. क्योंकि हमने सॉल्व करते हुए ये माइनस उसके साथ ही लगाया हुआ है यहाँ पे, तो not this electrodynamics. So this is this. So this becomes so g क्या है? Delta of t minus t prime minus r over c rho of r prime, और इसके नीचे एक r भी है और 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो बाहर आ जाएगा. This integral we can evaluate quickly, right? So this rho is function of r prime t prime. ये इंटीग्रल खत्म होगा तो ये रो किस पे बाकी बचेगा? ये बचेगा r प्राइम पे, और t प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा? Where this is 0, so this is 0 when t prime is equal to t minus r over c. So this is the potential. It is actually, you could have written it intuitively, directly as well, अगर आप थोड़ा सा common sense use करें, constancy of speed of light use करें. ये आपको ये कह रहा है कि फर्स्ट करें यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस और टाइम का, आपने यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है. तो हमें ऑलरेडी वैसे पता है कि हम कूलम लॉ से पोटेंशियल इज रो ओवर ऑल एनी टाइम. अब ये फॉर्मूला आपको ये कह रहा है कि अभी भी आप वैसे ही पोटेंशियल फाइंड करें, बस इतना कर लें कि जो टाइम यहाँ पे है इस फंक्शन के अंदर उसको t माइनस आर ओवर सी से रिप्लेस कर दें, विच मेक सेंस, क्योंकि whatever the field that we are experiencing here right now was given by the charge density which was present here r over c time earlier. तो आप डायरेक्टली सारा कुछ किए बगैर आर्गुमेंट से भी डायरेक्टली सॉल्यूशन को लिख सकते हैं. ये इसके लिए हाँ आप सोच सकते हैं, दिस इज t minus t prime minus r over c into 0 mean t prime equal to t plus r. हाँ सो इसके लिए ये होगा, तो अगर मैं दूसरे वाला लूँ तो दैट्स माइनस ही होगा. हाँ हाँ सही है, ये t माइनस c, ये t प्राइम होगा लेकिन तो प्लस हो जाएगा. तो इसको सब लोग समझते हैं इंट्यूटिव. So this makes sense, the solution, right? Or similarly, you can find the vector potential as u naught 4 pi as j of r prime t minus r over c over r. So these are called retarded potential, simply because you have to use source distribution which was present r over c time earlier. So in the next almost 1 month, we will be using this formula and this formula to compute potentials for different type of charge distribution, especially point charges in motion, to compute field, to compute potential and fields produced by the moving charges. सर जो हमारा ट्रेन है बेसिकली वो टाइम
ये जो t है ये करंट टाइम है, जी सर। और t माइनस आर ओवर सी जो है ये अर्लियर टाइम, क्योंकि हम ये पोटेंशियल लिख रहे हैं अपने इस पॉइंट और इस टाइम में, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट और इस टाइम पे जो पोटेंशियल है ये कंप्यूट होगा उस चार्ज या करंट डिस्ट्रीब्यूशन से जो आर ओवर सी टाइम पहले वहां पे, because the speed of light is finite and it is equal to c. प्लस के केस में Plus किस केस में there was present